मदन मथन घन निकुंज खेलत हरि। मदन मथन घन निकुंज खेलत हरि। राकारुचिर सरद रजनी। राकारुचिर सरद रजनी। यमुना पुलिन Hello. सॉरी यमुना पुलिन तट सुरतारु के निकट। यमुना पुलिन तट सुरतारु के निकट। प्रचेत रास चले मिली सजनी। रचित रास चली मिल सजनी। बाजत मृदु मृदंग नाचत सबे सुधंग। बाजत मृदु मृदंग नाचत सबे सुधंग। तेना श्रवण सुनियो बेनु बजनी। तेना श्रवण सुनियो बेनु बजनी। मदन मथन घन निकुंज खेलत हरि। राकारुचिर सरद रजनी। जय श्री हित हरि वंश प्रभु राधिका रमन। हित हरि वंश प्रभु राधिका रमन। मोको भावे माई जगत भगत भजनी। मोको भावे माई जगत भगत भजनी। मदन मथन घन निकुंज खेलत हरि। राकारुचिर सरद रजनी। जय श्री हरिवंश। जय श्री हरिवंश। श्री श्री राधा रमणो जयति। दन्तं पुलकोत्करेण विकसन्नी प्रपसून छविं। प्रोर्ध्वीकृत्य भुजद्वयं हरिहरि इति उच्चैर्वदन्तं मुहुः। नित्यन्तं द्रुतमश्रुनिर्झरचयैः सिञ्चन्तं मुरवीतलं। गायन्तं निजपार्षदैः परिवृतं श्रीगौरचन्द्रं नमः। Let us remember Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, who is in Vrindavan, who is standing in front of Radharaman temple and who is dancing along with all the devotees and his other associates. His hands are raised up and he is full of love for Godhead, and tears are flowing from his eyes. The tears are going all over his body and then falling on his feet. And when we look at his feet and then we look at the dust below his feet, the dust is all wet. So we take this dust and we apply it on our forehead and we bow ourselves. We pay our obeisances to Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu and all the Vaishnava devotees who are assembled there. यस्याह कदापि वस्नांचल खेलनोत्थ धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थमानि योगीन्द्र दुर्गम गतिर्मधुसूदनोऽपि तस्या नमस्तो वृषभानुभुवो दिशेऽपि. Let us remember Barsana, Shri Vrindavan Dham, Radha Kund, Shyam Kund, Giri Govardhan, Yamuna.
all the 12 forests, the entire Vrindavan. Let us remember that the wind which is blowing through Barsana, blowing through Radha Rani's palace, blows and goes to Nandagaon, Shri Krishna's palace. And when it enters the nostrils of Shri Krishna gets very kind of attracted towards Shri Radharani. Because this wind is carrying the aroma of Srimati Radharani's transcendental body. This wind that blows throughout the Vrindavan comes to us also. Let us bow to that direction of Vrindavan. Now, let us remember the lotus feet of Srimati Radharani and the dust below her lotus feet. Let us take that and smear our foreheads with that. Radharani is walking in Vrindavan. She's picking up flowers for Krishna. She's followed by millions and millions of Sakhis. And we are also one among those Sakhis. Radharani and Shri Krishna in Vrindavan are just 16-year-old. And us Sakhis, we Sakhis are also very young, 12-year-old, 9-year-old, 10-year-old. All of us are following Srimati Radharani. She is looking so beautiful. That when the birds of Vrindavan, they see her, they start singing. The peacocks in Vrindavan, they start dancing. The monkeys come and sit on the trees. The bees start following her because of the aroma coming from her transcendental body. The trees start dropping flowers wherever she goes. And the Sakhis are following her and taking the dust from her lotus feet, and then they are just blowing it in the air so that it falls on everybody and every place. So we are in this transcendental Vrindavan. We put our minds there and we pray to Radharani. Brahmeshwaradi Suduruha Padaravinda Srimad Paraga Paramadbhut Vaibhavayaha Sarvarthasar Rasavarshi Kriparda Drashtesh Tasya Namostu Vrishabhanubhuvo Mahimne Yo Brahma Rudra Shukanarada Bhishma Mukhyi Ralakshito Nasahasa Purushasya Tasya Sadyo Vashikarana Churna Mananta Shaktim Tam Radhika Charanarenu Manusmarami Adhaya Murdhani Puyada Purudare Gopyaha Kamyam Padam Priya Gunairapi Pichamaulehi Bhavotsavena Bhajatam Rasakamadhenum Tam Radhika Charanarenu Maham Smarami. Let us remember Radharani and her transcendental qualities. She is an expert in love. She is the ocean of affection. She is the ocean of compassion. She is the ocean of mercy. She is the ocean of radiance. She is the ocean of all beauty. May this Radharani, with all these 7 qualities, oceanic qualities, always play in our hearts. Vaidagya Sindhu Anurag Rasaika Sindhu Vatsalya Sindhu Rati Sandra Kripaika Sindhu Lavanya Sindhu Amrita Chavi Rupa Sindhu Shri Radhika Spuratu Meri Dikeli Sindhu Radha Sadhyam Sadhanam Yasya Radha Mantro Radha Mantradatri Cha Radha Sarvam Radha Jivanam Yasya Radha 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 Vachi Kim Tasya Shesham. Let us pray to Radharani. Radharani is the mantra. Radharani is the one, is the goal of life. Whatever practices we are doing, all those practices are to achieve this goal, that is Srimati Radharani, whose life
are dedicated to Sri Radharani, they are the most perfect beings. And if somebody is chanting continuously Radha, Radha, Radha from their tongue, what else is left for them? So let us just remember this, Radha Rani. Let's go to, yesterday we did till 165. Today we are going to go to 166 onwards. Yesterday where we stopped, Sakhi, Saraswati Sakhi is constantly praying. And she's saying, oh Radharani, please bless me. That even while I'm awake, may I remember you. When I sleep, may I remember you. When I'm dreaming also, let my dreams be only of you. In all these three states, O Radharani, let my mind be always on you. Whether by your mercy I go to Vaikuntha planet, or if you think I should be going to any hellish planet, O Radharani, it really does not matter anymore. But please be graceful on us, that under all circumstances, whether in heavenly planets or in hellish planets, wherever we are, may we always keep remembering your name, keep remembering your pastimes, keep remembering your form. May we always be thinking about you. O Radharani, let my mind always be near the banks of Yamuna, where there is a beautiful grove. And in that grove, you are sitting along with Krishna. Yamuna is full of waves right now because the love of both of you is flowing in Yamuna. And Yamuna is not able to control that love. So I can see those waves. Oh Radharani, let my mind be always wandering near Yamuna. Because Yamuna, when I see Yamuna, it only reminds me of your love. Alinde kalinde tat navalata mandiragate rata mador bhut adbhut shamajala bhara purnava pushoho sukha na milita nayanayoho shitam tulam kada kuryam sanjeevanamah राधा मुरभिदो। यमुना के तट पर एक नवीन लता भवन के बरामदे में परस्पर कंदर्प क्रीड़ा से उत्पन्न श्वेत राशि से भीगे हुए श्री विग्रह वाले और सुखमय स्पर्श के द्वारा मुंदे हुए नेत्रों वाले श्री श्री राधा कृष्ण की अहो कब मैं अनुपम शीतल पंखे से की हवा करूंगी। तो अभी इनका कल जहां हम रुके थे तो बार बार कह रही कि मैं यमुना के किनारे ही रहूं, मेरा मन वही यमुना में रहे। यमुना में निकुंज है, निकुंज के अंदर लता मंदिर है, लता मंदिर के अंदर आप दोनों बैठे हैं। तो अब उसी ही स्फूर्ति में है, पुनः कहती हैं ये दोनों बैठे हैं और प्रेम में इतने विवल हो रहे हैं दोनों जन। तो लता मंदिर में बैठी है राधा कृष्ण और ये बैठी है बाहर, सखियां सब बाहर बैठी होती हैं, लेकिन वहां से उनको दिखाई देता है थोड़ा बहुत। तो कह रही कि शाम का समय है, अच्छी अच्छी मंद समीर बह रही है और यमुना का ये निकुंज है और प्रिया प्रीतम दोनों बैठे हैं। प्रेम में ऐसे मस्त हैं एक दूसरे के कि कभी कभी प्रेम में इतनी ज्यादा वो प्रेमाग्नि बढ़ जाती है कि उस गर्मी से इनको कई बार पसीने आने लगते हैं। तो सखी को दिखाई देता है कि अरे ये पसीने आ रहे हैं। जब राधा रानी को और श्री कृष्ण को पसीना गिरता है, कभी भी अगर आपके ध्यान में वो पसीना आता है तो पसीना नहीं है, मोतियों के बिंदु हैं। और पसीनों में से हमारे जैसे प्राकृत पसीना नहीं कि दुर्गंध आएगा, राधा रानी के पसीने अगर आएंगे तो उनके श्रीअंग से बहुत अच्छी सुगंध आती है। तो सखियों को केवल सुगंध से समझ जाता है कि
क्या हो रहा है अंदर। तो सखी कहती है, सखी को वो भाव आया कि अरे राधा रानी को पसीने हो रहे हैं। सखी भागी तुरंत कुंज के अंदर, और कुंज में जाकर के तुरंत कपड़ा लेकर के, थोड़ा एक रुमाल लेकर के पोछा होगा, और फिर उसके बाद उनको ठंडा ठंडा जल वल दिया होगा और हवा किया है। और कह रहे हैं उस हवा करके जब सखी को कुछ अच्छा लगा, राधा रानी को अच्छा लगा, फिर ये सखी बाहर आई हैं। सखी कहती है, कब मुझे पुनः वो सेवा, जहां मैं आपको पंखा झिलाऊंगी, कब मुझे वो शीतल की पंखा हवा करने की, शीतल पंखे की हवा देने की सेवा मिलेगी। So Sakhi is sitting and her mind is only in Vrindavan. And right now her mind is in Yamuna, on the banks of Yamuna. Now when we see Yamuna, I told you Yamuna is just, when you see the waters of Yamuna, it is the flowing love of Radharani and Shri Krishna. And when you see the Yamuna, in Yamuna, there are beautiful birds, swans, and there are thousands and thousands of golden lotuses that are there. And in that, near that, there is a small canopy kind of thing, or gazebo kind of thing made up, where Radha and Krishna are sitting, and they are sitting with each other and their hands on each other, and the wind is blowing, and they're very happy. They're having their alone time, and all the Sakhis are sitting outside the grove. Suddenly, Saraswati Sakhi realizes, oh my God, looks like because they're in love, the fire of that love, that has increased so much that maybe Radharani is sweating, and Radharani starts sweating. When Radharani sweats, the perspiration is there, but you can see that drops of that sweat is falling on her face. But it's not like our sweating, our perspiration. When it falls on Radharani's face, Radharani's face is glowing, golden. And Shri Krishna's face is that like of a sapphire, glowing sapphire. And when this sweat drops fall on their faces, it seems like white pearls are falling. And similarly, it seems like blue pearls are falling in Krishna's face. Their sweat is not like ours, that if we sweat, we will smell. Their sweat is not like that. Their whole body is emitting such good fragrance. So even when they sweat, the sweat will only emit fragrance, transcendental fragrance. So all these Sakhis who are sitting outside the kunja, when the aroma goes in their nose, they know, oh, Radharani is sweating. And Saraswati Sakhi just gets up from that. She's sitting outside the grove. So she gets up and goes inside. And then she takes a small paper nap. Namasha, can you just mute? Thank you. And the Sakhi goes there and then wipes her sweat, Radharani's sweat. And then she takes a fan made up of peacock feathers, and then she shows the fan to Radharani, and then Radharani is cooled down. So Sakhi says, when will I get that service of showing the fan to you, of fanning you, oh Radharani? Please help me, please bless me for that service once more. Chadam madhuraganatah, chadam manda hindolatah, chadam kusumavayutah, suradakeli shilpaikshanam. Aho madhura sadaras, pranayakeli vrindavane, vidagdavaranagari, rasika shekharo khelatah. इनका ध्यान वृंदावन में ही है। तो पोंछ दिया, पसीना पोंछ दिया, हवा दिखा दिया, फिर वहां से बाहर आ गई। फिर बाहर आकर के बैठ करके देख रही कुंज के अंदर ये दोनों उठ गए। क्यों उठे भैया? इनका उठने का संकेत, जब ये उठते हैं तो पायल छिन करती है, तो इनको समझ में आता, अच्छा उठ गए। अच्छा, उठ करके अब क्या कर रहे हैं? अरे उठ करके थोड़ा दूर आगे गए, और वहां क्या हो रहा है?
आज भगवान को गाने का मन हो रहा है, होता है ना, प्रिया प्रियतम प्रेमी प्रेमिका कहीं चलते हैं तो गाते हुए चलते हैं हाथ पकड़ के, तो एक दूसरे का हाथ पकड़े हैं और चलते हुए जा रहे हैं, और आज भगवान गाना सुना रहे हैं, तो उनके गाना सुनते सुनते फिर राधा रानी का मन आ जाता है, फिर राधा रानी भी उस गाने में गाना गाने लगती हैं। तो क्षण मधुर गानतः, क्षण क्षण में तो गाना गाने लगते हैं, और क्षण मंद हिंदोलतः, गाना गाते गाते फिर दूर में राधा रानी का मन होता है चलो झूला झूलते हैं। फिर भगवान बोलते चलो। फिर कहीं तो सखियों ने झूले का इंतजाम करके रखा है, अब ये दोनों गए झूला झूलने, अब झूले पे बैठी, तो आपको तो पता है भगवान कैसे झूला झुलाते हैं। तो झूला देखेंगे तो झूला भी सजाया हुआ है। पहले तो राधा रानी ने बोला देखो मैं बैठ जाती हूँ श्याम सुंदर, लेकिन तुम ज्यादा जोर से नहीं झुलाना मुझे, तुम्हें पता है मुझे अच्छा नहीं लगता, धीरे 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 धीरे, जैसे हवा चले ना ऐसे धीरे धीरे। श्याम सुंदर ने बोला बिल्कुल ऐसे ही धीरे धीरे, हम जोर से झुलाएंगे नहीं तुम्हें। और श्याम सुंदर ने धीरे 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 झुलाया। फिर धीरे 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 जब ये खोई हुई है इस झूले में, और श्याम सुंदर ने अपना हाथ उनके कंधे पर रखा हुआ है, तो उस स्पर्श सुख में खोई हुई है वो। और उसके बाद श्याम सुंदर ने एक झटका दिया और झूला बहुत ऊंचे गया। जैसे ही झूला ऊंचे गया, राधा रानी घबरा करके तुरंत श्याम सुंदर को उन्होंने कस के आलिंगन कर लिया, पकड़ लिया। तो कह रहे हैं क्षण क्षण मंद हिंदोलतः, कभी कभी झूले में जाते हैं और झूले में ऐसी ऐसी मिलन माधुरी का आस्वादन होता है। क्षण कुसुम वायुतः सुरत के शिल्प ही, और कभी कभी दूर से कहीं किसी बाग में उन्होंने देखा किसी कुंज में अच्छे फूल खिले हैं, तो राधा रानी का मन हुआ चलो 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 वहां चलते हैं, उस वाले कुंज में चलते हैं, वहां कितने अच्छे फूल खिले हैं चलो। तो कहते चलो। अब श्याम सुंदर ले जाते हैं उस वहां पर, तो अच्छे अच्छे जितने सुगंधित फूल हैं श्याम सुंदर चुनने लगते हैं, और ऐसी राधा रानी भी वहां से जाकर के सुंदर सुंदर फूल श्याम सुंदर के लिए चुनती हैं। फिर वो सुंदर सुंदर फूल लेकर के एक दूसरे के लिए माला बनाते हैं, कभी वेणी बनाते हैं, एक दूसरे को सजाते हैं। तो पुष्पों की सुगंधित वायु के सेवन से और कभी कभी सूरत क्रीड़ाओं के कलाओं से ये विहार करते हैं। तो सखी को ऐसे ऐसे दर्शन राधा रानी के और श्याम सुंदर के इन कुंजों में हुआ करते हैं। सो सरस्वती सखी says, oh Radha Rani, when will you give me that seva, that service where I will be showing my fan to you? And then suddenly she, because her mind is only near Yamuna right now, Sakhi's mind is wandering in Yamuna. So she sees, oh, she went, she gave the fan, and then Radharani is cooled down. Then Sakhi comes out of the grove, and Sakhi sits down. And all the Sakhis are sitting outside the grove, And then they see that Radharani has got up. Shri Krishna has also got up. So every Sakhi is thinking, why did they got up? What happened? Then they realize, oh, maybe they got up to play. But they see, no, these two got up, and then they start walking towards another place. So Sakhis also start following. Where are these two couple going? Where is this couple going? While going, they hold each other's hand because they're in so much love. So holding each other's hand, they're walking. And then, because see, these are like teenagers. They're young. They're only 16. Okay. So Krishna wants to impress Radharani. So Krishna starts singing a beautiful, romantic, lovely song. And Radharani is very happy. Wow, Shyam Sundar, you sing so beautifully. And then when Krishna is singing, and he's singing a song which is expressing his feeling, at the same time Radharani also joins in. And then they both are singing a duet, expressing each other's feelings, and the love is going on. Sometimes, when you want to express love, song is a very beautiful medium to express everything that you have in your heart. So Radharani is expressing her, and these two are singing a duet, and they are enjoying their duet, but the Sakhis who are following them are also enjoying these loving songs. And Sakhi says, oh, when will that day come? I will hear those songs again. Then they see, they change direction. And in far off grove, there the Sakhis have made a beautiful swing for them. Radharani says, I want to get into the swing. Krishna says, yes, let's go. And then they both sit on the swing. And Radharani says, Shyam Sundar, I'm warning you, please, I'm requesting you. Let the swing be gentle. Don't push it too hard. Let it not be faster. I get scared.
Krishna says, don't worry, don't worry. I will do it very gentle. I'll sit with you. Don't worry, I'll sit with you. And then they both sit on the swing. And Krishna keeps her hand behind, keeps his hand behind her. And then she feels very comfortable in Krishna's arms. And then the swing starts going slowly, gently, slowly, gently, slowly, gently. And Krishna suddenly starts increasing the speed and suddenly just goes zoom at a very fast speed. And when the swing goes up, Radharani gets scared, and then she closes her eyes and holds Krishna tightly. And that's what Krishna wants. And then the swing comes back. Again, it's going in that speed. Again, it's coming back in that faster speed. And Radharani does not want to leave Krishna. She's like holding him tight. Krishna, I told you don't do this. Krishna, I told you don't do this. And Krishna is laughing and smiling because he wanted the hug. And all this pastimes the Sakhis are seeing, and they're laughing and they're enjoying. Wow, this is the best thing. Krishna, do it more. We are enjoying it. Do it. And Sakhis are enjoying. Then after some time, Krishna says, okay, now let me just stop. Then the swinging is done. Then slowly they come down. And Radharani is like, why did you do this? This was not right. I asked you to be gentle. But then, they patch up again. Then they keep moving ahead. Then they go to another grove and they see, oh, what kind of smell? Oh, what flowers are here? Oh, beautiful flowers. Radharani says, you go that side. I'm going this side. I want to do something. Radharani goes and picks up some beautiful flowers for Krishna. And Krishna goes there to the other side and picks up some beautiful flowers and makes a nice bouquet and brings it to Radharani. And Radharani takes her flowers and makes a nice garland for Krishna. And then they exchange love through flowers with each other. In this way, Sakhi is accompanying them everywhere, and she's seeing how beautifully the couple loves each other. How many beautiful exchanges are happening between these two. So Sakhi says, oh Radharani, when will that day come again that I'll be able to see these beautiful exchanges, loving exchanges between you two? Adya Shama Kishora Maulirah Prapto Rajanya Mukhe Nitvatam Karayoho Pragriya Sahasa Nipatvim Pravishat Shroshe Talpamilan Maharati Bhare Prapte Api Sheet Karitam Tadvichi Sukhatarjanam Kimuhare Swashror Shrotra Randha Shritam. कह रही है, अहो आज संध्या के समय आए हुए किशोर शेखर श्री कृष्ण ने सहसा श्री राधा के हाथों को पकड़ कर ले जाकर कदम वन में प्रवेश किया। वहां शैया पर मिलते ही महारती आनंद राशि को प्राप्त करके भी श्री राधा के द्वारा उस रति के तरंग में शीतकार युक्त श्री कृष्ण के सुखमय तर्जन का क्या मैं अपने कानों के रंध्रों में प्रवेश कर सुन पाऊंगी। सो अगेन यहाँ पर क्या हो रहा है कि स्फूर्ति में ही है, लीला राज्य में ही है। तो अब ये जो लीला हुई कि चलो घूम फिर लिया, वहां से खूब झूले झूल लिए, फिर पुष्प तोड़ लिए, सब घूमने फिरने के बाद फिर अपने अपने घरों में आ गए, अपने अपने महल में आ गए। शाम हो गई। अब शाम हो गई, अब श्याम सुंदर फिर से बेचैन कि अब तो राधारानी को फिर देखना है। तो श्याम सुंदर क्या किए, आए और इनके घर के बाहर थोड़ी सी दूर में जाकर के छुप करके मुरली बजाने लगे। और मुरली में तो एक ही टेर है, बस राधा कब मिलोगी। राधारानी ने देखा, अरे ये तो श्याम सुंदर कहीं आसपास ही हैं, लग रहा है मुरली बजा रहे हैं। राधारानी अपने फट से अपने कमरे से निकल के नीचे आई। अब नीचे उतरी तो सखी भी पीछे पीछे, कहाँ जा रही हो राधा, कोई देख लेगा तुम्हें। तो चुप कर, तू संभाल ले, चल चल, कहीं तो कृष्ण आए लगता है। तो दोनों जन उतरते नीचे उतरते जैसे ये दरवाजा खोलती है, क्योंकि जैसे वो नीचे उतर रही है ना, तो श्याम सुंदर को तो उनके
राधा रानी उतरती है तो वो खुशबू से ही श्याम सुंदर को समझ जाता है कि अब आ गए नजदीक। श्याम सुंदर आए दरवाजे के पास, जैसे ही दरवाजा खोला सखी ने, श्याम सुंदर ने तुरंत हाथ पकड़ा राधा रानी का और खींच करके सीधा वहां से निकले, भागे और लेकर के एक कदम्ब का जंगल था उसके अंदर चले गए। पीछे पीछे सरस्वती कि ये क्या कर रहे हैं ये लोग, पकड़े गए तो पीछे पीछे भाग रही है वो भी सरस्वती। लेकिन ये कितना पीछा करेगी, ये दोनों तो इतनी तेजी से भागे जंगल के अंदर जाके कहीं छुप गए। अब घना जंगल ढूंढ रही कहाँ है ये दोनों। थोड़ी देर के बाद कहीं दूर से तो एक आवाज आती, शीतकार की, ऐसी आवाज आती है। दोनों प्रेम में थे, जो भी हल्की फुल्की बातें कर रहे होंगे खुसुर फुसुर। धीरे धीरे वो आवाज आती है तो उस आवाज को सुन करके उस कुंज के पास सखी जाती हैं और बैठ जाती है कि अच्छा चलो जाने दो, अब मैं इनको नहीं कुछ बोलूंगी, अब ये दोनों को मैं बस यहीं पर बैठ करके इनका मैं इंतजार करूंगी। तो सखी कहती है कि कब वो दिन आएगा कि मैं फिर से तुम्हें श्याम सुंदर ऐसे खींचेंगे और खींच करके तुम्हें कदम वन में ले जाएंगे और वहां तुम्हें शैया पर बिठाएंगे और तुम रति के आनंद में होगी और तुम्हारे मुख से ये शीतकार निकलेगा और मैं अपने कानों के रंध्रों से उनको सुन पाऊंगी। So Radharani, so the Sakhi is in that mood of Radharani. So now we just heard that they were singing and then they went on the swing, and then after swinging they were um, they picked up flowers for each other, and then they had some nice time with each other, and then they were tired, and then they both went to each other's to their respective homes. Krishna went to his home, Radharani went to her home. Sakhi also accompanied her. Now it was evening time. And when it is evening time, Krishna cannot be without her. Krishna says, when will she come? Krishna just comes down below her palace, okay, wherever she lives, Radharani. So Krishna just comes down and starts playing the flute. When Radharani is hearing the flute, she's like, oh my God, looks like Krishna is somewhere near. Radharani just comes out from her room and then she rushes towards the main door. And Sakhi is like, where are you rushing? Somebody will see you. She's like, no, I think Krishna is here. See, look here. Can't you hear? He's playing Radha Radha on his flute. I think he's here. Sakhi is like, don't go. It will be dark. The sun will be set any time, and people will ask me, where is Radha? She's like, I don't care. You take care of everyone. Let's go. And then Radha is running and she comes down, and Sakhi is also there. Sakhi is like, wait, let me open the door. Let me see who is there. And Krishna has already guessed that Radharani is come, because when Radharani approaches closer, there is a nice fragrance coming out of Radharani's body, a specific fragrance of only Radharani. Krishna knows, oh, the fragrance has come near. That means Radharani is almost near. Krishna comes near the door. Sakhi is opening the door and Radharani is standing there. When Sakhi opens the door, Krishna just goes and grabs Radharani's hand and just snatches her from the door, grabs her hand and then pulls her out, and then they both run towards a forest. And Sakhi is running behind them. Stop, where are you guys going? Sakhi is following them and Radha Krishna are running, and there is a forest of Kadamba trees. Krishna just takes Radharani to that Kadamba forest. It's very deep, dense forest, and Sakhi is following them, but Sakhi does not know where they've gone. And Sakhi feels, oh my God, these people, they again left like this. I have to look for them. Hope they are safe. And then Sakhi is looking in the forest. And then when she goes deeper inside, in a particular grove, she hears a sound. A very small sound, very hush-hush sound. And Sakhi says, oh, okay, this hush-hush sound. Oh, these young lovebirds, they are making this hush-hush sound. They are here. Let them have a good time. I'm not going to disturb them again. And Sakhi just sits outside the grove waiting for them to come out. Sakhi says, oh Radharani, please, I want to see that thing again one more time. Krishna playing his flute, calling you, and when I open the door, grabs you, pulls you to the forest, and there I'm sitting outside the grove, hearing your hush-hush sounds. Srimad
श्रीमद् राधे त्वमथ मधुरम श्री यशोदा कुमारे प्राप्ते कैशोर कमति रसाद वल्गसे साधु योगम इत्थम वाले महसि कथया नित्य लीला वयः श्री जाता वेशा प्रकट सहजा किंतु दृश्या किशोरी। हे राधे, हे श्री राधे, श्री यशोदा कुमार के मधुर नव किशोर अवस्था के उदित होने पर आप भी अतिशय अनुराग के कारण उसी उत्तम नव किशोर अवस्था को प्राप्त हो रही हैं। इस प्रकार कहने पर जिस नूतन ज्योति श्री राधा में नित्य लीला से संबंधित वयस और शोभा का आवेश हो गया और श्री कृष्ण के प्रति नैसर्गिक प्रेम प्रकट हो गया, वे नित्य किशोरी श्री राधा क्या मेरी नयन गोचर होंगी। तो लीला में खोए हैं, लीला राज में। अब राधा रानी इस प्रकार से गई वहां पर, फिर लेकर के उनको पुनः आ गए अपने अपने जगह पर। फिर सवेरा हुआ और सखी तो उसी चिंतन में है, तो सखी को स्मरण हो आया इनका प्रथम मिलन। हालांकि ये नित्य किशोर नित्य किशोरी हैं, इनका हर मिलन प्रथम मिलन है, फिर भी लीला राज्य में है। तो इनको स्मरण होता है कि एक बार निकुंज में, निवृत्त निकुंज में श्री कृष्ण ने संकेत कुंज पे बुलाया था, ऐसे ही बांसुरी बजा रहे थे और राधा रानी ने, छोटी छोटी राधा रानी थी, पहली बार मिलने जा रही श्री कृष्ण को। तो सखी ने इनको खूब अच्छे से सजाया था और सजा वजा के सखी लेकर के जा रही हैं। तो पूरे रास्ते राधा रानी थोड़ी सी घबराई सी, थोड़ी सी शर्माई सी, होता है ना जब पहली बार जब ये लड़का लड़की को पहली बार प्रेम होता है और पहली बार मिलना होता है, तो कितनी घबराहट होती है लड़की को, पता नहीं क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, घबरा घबरा के जाते हैं ना। तो हमारी ये नित्य किशोरी नव किशोरी है, इस समय नया नया यौवन है, तो 16 साल की नव किशोरी, और वो भी नव किशोर है, नित्य है नव, तो नव और नित्य, नव मीन्स नवीन, तो वो नव किशोर या नव किशोरी, तो एकदम नवीन यौवन है दोनों का। वो भी उतने आतुरता से वहां बैठे वेट कर रहे हैं कि अब आएगी अब आएगी अब आएगी। और सखी को यहाँ सजा करके सखी राधा रानी को लेकर के जा रही है, और राधा रानी पूरे रास्ते बोलते हैं मुझे डर लग रहा है, पता नहीं क्या करना है, क्या करेंगे, क्यों जा रहे हैं मिलने, चलना घर चलते वापस। सखी कहती क्यों इतना शर्मा रही हो, वो कोई तुमसे क्या बड़े बूढ़े दिखाई देते तुमको, अरे नहीं नहीं तू समझना, अरे वो तुम्हारे ही तो उम्र के हैं, तुमसे छोटे ही है बल्कि 1 साल। और जैसे जैसे वो नव किशोर हुए ना, वैसे वैसे तुम भी नव किशोरी हुई हो, तो तुम में और उनमें कोई ज्यादा कोई उम्र का फर्क नहीं जो तुम ऐसे शर्मा रही हो। तुम चिंता मत करो, वो तुम्हारे जैसी ही बातें करेंगे, तुमसे अच्छे से बातें करेंगे, तुम चलो। अब राधा रानी घबराए पूरी रास्ते, नहीं 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 जाएंगे। और आगे जाकर के जैसे ही वो संकेत कुंज नजदीक आता है, अब वहां से भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी और भगवान श्री कृष्ण के सेम श्रीअंग की खुशबू और यहाँ राधा रानी की खुशबू। अब वो गेट तक पहुंचती है राधा रानी, अब सखी बोलती है मेरा काम हो गया, अब यहाँ से तुमको अकेले जाना है। राधा रानी हाथ पकड़ लेती, नहीं नहीं ऐसे कैसे बोलती है तू, मुझे कहाँ छोड़ के जा रही है, मैं नहीं जाऊंगी अंदर। और सखी खूब मनाती है प्यार से, अच्छी अच्छी बातें करके कि तुम क्यों शर्मा रही हो, जैसी सुंदर तुम हो वैसी ही श्याम सुंदर है, जितना अच्छा तुम्हारा मधुर स्वभाव है उतना ही मधुर स्वभाव उनका भी है। तुम वहां जाओ अकेले, मैं वहां नहीं जाऊंगी, तुम वहां अकेले जाओ, तुम बैठो उनके पास, फिर देखना वो कितनी कितनी सुंदर सुंदर तुमसे बातें करेंगे। हे स्वामिनी तुम भूल जाओगी, तुम उनकी बातों में खो जाओगी, वो जब मुस्कुरा देंगे तो तुम्हारा सारा भय दूर हो जाएगा, सारी लज्जा दूर हो जाएगी। हे स्वामिनी अब तुम यहां से तुम जाओगी, तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल बाहर गेट पर बैठी रहूंगी पहरेदार की जैसे,
पक्का ना सखी, मुझे छोड़ के कहीं जाना नहीं वहीं बाहर बैठे रहना। हाँ हाँ हाँ, अच्छा मैं जाती हूँ। और राधा रानी फिर अंदर चली जाती है। तो यहाँ पर कह रही है सेम बात कि श्री राधा में नित्य लीला से संबंधित वयस और शोभा का आवेश हो गया। अब उनके अंदर प्रेम की भावना आ गई और श्री कृष्ण के प्रति उनका जो नैसर्गिक प्रेम था वो प्रकट हो गया। और वही नित्य किशोरी राधा क्या फिर से मेरे नयन गोचर होंगी। तो सखी went to that place in that forest where these two were there. And then when it was morning time, early morning, even before everybody wakes up, Sakhi brings Radharani back to her room safely. And then Sakhi, when it is dawn time, Sakhi just sits thinking of Radharani, how beautiful she is. And then Sakhi goes on thinking that when Radharani had just become a teenager, she had just stepped into her 16th year. Even though Radharani is forever young, and Krishna is forever young, forever 16, they both are. And whenever they meet, it seems like they are meeting for the first time. But for the sake of enjoyment of different pastimes, today Sakhi is remembering the first time when Radharani turned 16, and Krishna is almost also 16. And Krishna has told Sakhi that please bring Radharani to me tonight. I just want to spend some time with her. Please make some arrangements. I really like her. I really love her. It's like the first proposal, you want to spend time with the girl. You want to go out on a date. So Krishna has already told Sakhi, and Sakhi is the messenger. Sakhi has already said the message to Radharani that Krishna wants to see you right near Yamuna, and there is a small grove. He has specially prepared the grove for you. So please dress up and I will take you there. And Radharani is like anticipating since morning. Oh my God, I have to go and meet Krishna. That first date, how it is. You feel like, oh my God, I have to go and meet him. What should I wear? What should I not wear? What will I talk? What will I not talk? How will it be? Oh, am I looking good or not? All those feelings comes, when you go for the first time. So Sakhi is here, is the best friend. So Sakhi is like, don't worry, I'll dress you up perfectly. You don't have to worry about anything. You already look perfect. Do I look really good? Yeah, you look perfect, Radharani. Who else is more beautiful than you? In the three worlds, there is no one compared to you, Radharani. You are the most beautiful. Don't worry. Okay, what about my dress? Can you arrange everything? Radharani, relax. You have to just chill. Don't get so tensed. Okay. And then when the time comes to go, and Sakhi has dressed her up, she has put some beautiful, nice red colored dress to Radharani, and then she has put a bindi to her, and then flower garlands and necklace and bangles and anklets, and fully dressed up and decked up. Then they both leave. And throughout the way, Radharani is like, I am scared, Sakhi. Sakhi is like, why are you scared? What happened? I don't know what I'm going to do there, Sakhi. What am I going to talk to him? What is he going to do to me? I'm really worried. Sakhi is like, don't be worried. Don't be worried. He's not an old man that you have to be really scared of him. He's as young as you. If you have turned 16, he's also turned 16. He'll be your good friend. He knows you more. He will know your heart. And you both will enjoy each other's company. I assure you. Swamini Radha is like, really? Are you sure? What if I get scared? What if I'm not able to talk in front of him? What if I start shivering? Sakhi, what is going to happen? Sakhi is like, don't worry. Once you look at him, as you are the most beautiful in the three worlds, he is the most handsome in the three worlds. And when I look at him, and if he smiles, I bet all your fear will go away. When you look at his eyes, you will forget the whole world. And when he will hug you, you will forget yourself. You will melt in his arms. Or Radharani.
Go and have the best time. And saying so, Sakhi makes Radharani feel comfortable. And Sakhi is taking Radharani all the way to the grove. And there at the entrance, Radharani is stunned again. Sakhi says, my job is done. From here till where Krishna is sitting, you have to go alone. I'm not coming inside. Radha is holding Sakhi's hand. Please don't leave me and go. I don't think so I can go there. Sakhi is like, go there. I assure you, he is the kindest person on earth. He'll take care of you. And I will, in case if you still don't want to spend a lot of time, I'll be sitting right outside this grove. You just call me. I'll be present there. So from now here onwards, it's your own thing. I'm leaving. And then Sakhi leaves Radharani and goes and sits outside the grove. Sakhi says, when will that day come again? I will see you both meeting like this. I will take Radharani and Radharani will be scared to hell. What is happening? And then I will be the one taking away the worry and the fear by talking nicely to Radharani. Oh Radharani, when will that day come again? When will that day come again? Last slok we'll take for today. Ekam kanchana champak chavi param neelambud shamalam kandarpo taralam tathaikam param naivanukulam bahihi kinchaikam bahumana bhangi rasvachchatuni kurvat param pasya kridati kunjasimni tadaho dvandam mahamohanam. अहो देखो, एक श्री राधा स्वर्ण चंपक की कांति से युक्त हैं और दूसरे श्री कृष्ण नील मेघ की भांति श्याम वर्ण युक्त हैं. तो अब कुंज के बाहर बैठी हैं सखी. अब दूर से देखेंगी तो कुंज के अंदर क्या दिखाई देगा? केवल एक पीली पीली रोशनी और एक नीली नीली रोशनी. ये भी झांकी जब आप करो तो मैंने बार बार कई तरह से रोशनी आती है. एक तो गोरी गोरी राधा रानी, उनके अंदर से स्वर्ण कांति, स्वर्ण कमल जैसी कांति. एक तो श्री कृष्ण नीले नीले, उनके अंदर नील मेघ समान कांति. राधा रानी के हृदय में श्री कृष्ण, तो राधा रानी के हृदय से नीली नीली कांति. श्री कृष्ण के हृदय में श्री राधा रानी, वहां से पीली पीली कांति. तो इस प्रकार से कभी कभी इनके कपड़े बदल जाते हैं तो ये सारी के सारी जो कांतियां हैं ना, नीली पीली, ये मिक्स हो जाती हैं. दूर से जब सखियां देखती हैं तो कुंज के अंदर ये दोनों केवल इतने चमकते हुए नजर आते हैं, बस ये दो रोशनी की जैसे. इस प्रकार श्री कृष्ण कंदर्प के आवेश में अत्यंत अस्थिर हैं. भगवान को प्रेम हुआ है तो अस्थिर है. और श्री राधा, वो भी बाह्य रूप से अनुकूल ही नहीं. और फिर एक श्री राधा अनेक प्रकार से मान कर रही हैं और दूसरे श्री कृष्ण सरस चाटुकारिता कर रहे हैं. देखो तो निकुंज भवन के भीतर ये परम मोहन युगल विहार कर रहे हैं. तो अब ये सखी उनको छोड़ करके आ गई, दोनों जन को अंदर. फिर सखी बाहर बैठी है और सखी देखती है, जैसे कहा ना, पीली रोशनी और नीली रोशनी को देख रही है. फिर थोड़ी देर में देखती है, अरे ये तो शायद मुंह फुला करके बैठ गई है. राधा रानी तो मान करने में माहिर है, किसी भी बात के लिए मान हो गया रहेगा. भगवान से जब रहा नहीं जाता ना तो कई बार छूने लगते हैं. भगवान से रहा नहीं जाता तो कई बार घूंघटा उठाने, जो घूंघट है उसको हटाने लग जाते हैं. राधा ने उसी बात के लिए मान कर जाती है कि क्यों आगे बढ़ रहे हो, जब मैंने मना किया. तो किसी भी बात के लिए राधा नहीं मान कर सकती हैं. और जब राधा नहीं मान करती हैं तो श्याम सुंदर, वो नीली ज्योति अभी चरणों में बैठी है. पीली ज्योति उधर सिंहासन पे बैठी है और नीली ज्योति चरणों में बैठी है. चरणों में बैठ करके मना रही है. और श्याम सुंदर तो मीठी मीठी बात करके किसी को भी मना सकते हैं. तो सखी के मन में
ये सारी बातें कि हा श्याम सुंदर कैसे मना रहे हैं, इतने प्रेम से मना रहे होंगे, और राधा रानी हमारी स्वामी मान करके बैठी होगी। आज मान के बाद फिर जब इनका प्रेम होगा, कितना सुंदर प्रेम, एक दूसरे में ये डूब जाएंगे, ऐसा ये प्रेम होगा। और ये जब डूबते हैं एक दूसरे के प्रेम में, तो पूरा वृंदावन इनके प्रेम में डूब जाता है। ऐसा ये प्रेम, ऐसे सुंदर सुंदर लीलाएं इस निकुंज भवन में हो रही हैं, और इस निकुंज भवन में ऐसे परम मोहन युगल विहार रहे हैं। So the Leela happening, Radharani was a little scared, and Sakhi says, now you're going to go, I will sit outside for you. And Sakhi is waiting there outside and seeing from far, you can see the kunjas. And then when Sakhi goes far, she sees that it's no more two forms, there are only two lights. One is because Radharani is golden, so her body is emitting golden light. So from far, you can't see the features so clearly. From far, you're only seeing the lights. So Radharani is golden light. Shyam Sundar Krishna is blue light. When you look at Radharani's heart, in her heart is Krishna. So from her heart is coming a blue light. When you look at Krishna, in his heart is Radharani. From there is coming a yellow light. So Sakhi sitting outside far is only seeing these lights. And then after some time Sakhi sees, oh, that yellow light is sitting in a nice throne. The throne is also shining. And below the feet, at the feet, is the blue light, Krishna. That means probably Radharani must have become upset for something. Sometimes when Krishna sees Radharani, he goes out of control. He's like, just holds Radharani's hand. And sometimes Radharani is like, I told you not to come near me. Don't hold my hand. Krishna can't control himself. He starts pulling Radharani's wheel. And she's like, don't, I told you not to do. Sit there. I don't want to talk to you. Done. I'm going out from here now. If you don't listen to me, I'm going. And Krishna is like, no, please don't go. Please don't go. I won't do. I promise I won't do anything. Sit down, please. And Radharani just sits, and Radharani is like, I'm not going to talk to you. And then Krishna just goes on talking sweetly to her. And slowly Radharani starts smiling. And all these things, Sakhi is watching from the groves outside. She sees this yellow light, blue light, doing so many things inside the grove. And she says, let my mind always reside in this Vrindavan, where this young couple is always performing such transcendental pastimes. So with this, we'll close the class now, or end the class. Jai Shri Krishna, Hari Bol. Beautiful. Thank you. Thank you, Smita ji. Very हरि nice. बहुत ही बोल अच्छा था. हरि हरि बोल. बोल. हरि बोल, हरि हरि बोल. बोल। जब आप वो गाना बोलती थी ना कि वो गाना गा रहे हैं, तो कौन सा गाना? चलो बोलो. दिलदार चलो चिल के पार चलो, हम है तैयार चलो. I know, beautiful song. Oh, Wow. and then Nauka Vihar. Nauka Vihar. Wow. Oh God, Oh God. I wanna go there. Beautiful. Yeah, sure. Yeah. All right. Every day we are going anyways. Okay. All right. Radhe, Yeah, all Radhe. right. Radhe, Radhe. I know. Radhe, Radhe. Okay. Radhe, Radhe. Got it. Hari Bol. Hari Bol. हरि बोल.